हमें खुद की कॉन्शियसनेस का सोर्स नहीं पता. Exactly. Essentially, so we're just like flesh and bones and matter put together, right? So how are we conscious? We are not. हमें There, भी समझ नहीं आता. like there are different kind of what to say What is versions of consciousness. There is this thing called panpsychism. As for panpsychism, each and everything in this world is conscious, not just humans. Even a rock on the road is conscious. It's like that. So there are many theories. Is Uh, that what you say? no, not exactly theories. We cannot call it theories. They are more like hypotheses or philosophies, you can say. Where there is no ways to prove it. It has not been experimental. Like, how would you do experiments with consciousness? Like, that's very weird. Like, it is at that level of the stage. So again, I know I won't be able to like make artificial consciousness. That's like 50 years in future. But But if even if you're able to make a dent in even, the yeah, that exactly, even if I be able to like start the field like, like rolling a stone, like being Alan Turing of AI, like that would be enough for me if I could like even just आपका start. नाम क्या है भाई? नाम मेरा तो मधुसूदन पाठक है, but I go by the name MySpy, like that. अरे that is very creative. But MySpy ऐसे हम क्लास 6th में ही MySpy नाम सोच लिए थे अपना. like it's like a whole internet persona of mine. I have 5 personas. I अच्छा exist in 5 forms, so उसमें से एक form मेरा MySpy है. no, but Madhu bro, like what all you're saying is like very, you have to like really not be a selfish person to think ऐसे. हम्म. To, you're not thinking for yourself, you're thinking for science. You're not saying मेरे life का purpose है बस पैसा कमाना. You're saying मेरे life का purpose है कि अगर मैं कुछ famous नहीं भी हुआ, No, I it want does to not matter. contribute to a big thing. Ascend humanity, like that's what we are मतलब meant for, no? collectivist type से सोच रहे हो आप, Be a which is like part of humanity. That's you what. have to be very unselfish, like things like that. I respect Of that. course, of course. Of course, you have to be smart as well because it's a very complicated field. But Hmm. I think smart तो लोग हो सकते हैं, हाँ, बहुत लोग. बिल्कुल बिल्कुल. In past also there has been a lot of cases But with this. having the mental capacity to choose it and come to terms with the fact कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं देख नहीं पाऊंगा फाइनल प्रोडक्ट, मैं तब तक खत्म हो चुका हूँगा, मुझे पता भी नहीं रहेगा कि जो मैंने काम किया वो सही जगह पे गया नहीं गया, गया नहीं गया. लेकिन एटलीस्ट आई हैव द सेटिस्फैक्शन कि मैंने कोशिश करी, मैंने उस पे एक ट्राई मारे हम. that's अब बना बना नहीं बना नहीं बना, हम ट्राई तो किए हैं कम से कम. कम से कम फेलियर से भी कम से कम वो तो पता चला हाँ. कि इस डायरेक्शन में नहीं जाना है. अगर हम कुछ करा, हाँ वही एग्जैक्टली, अगर हम नहीं भी बना पाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से नहीं इट्स बनेगा. लाइक अगर दो रास्ता है और एक रास्ते में मर जाओगे, एक रास्ते में जिंदा रहोगे. इट्स लाइक दैट. आई वांट टू अगर बी यहाँ दैट. पर मान लीजिए 100 रास्ते हैं, ठीक है, और 100 में से टू बी 50 ऑनेस्ट, रास्ते, इस फील्ड में तो फिलहाल 1000 रास्ते हैं, इतने कुछ नहीं पता है ना किसी बहुत को. एग्जैजरेशन भी नहीं है ये, मतलब बहुत ज्यादा मैं हाँ. वाटर डाउन करके बोल रहा हूँ. बट मान लो अगर 100 रास्ते, उसमें से 50 में मरोगे और उसमें से यू नो उसमें 99 में मरोगे, एक सही रास्ता है, एक सही रास्ता है. एक सही रास्ता है. कम से कम आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं किसी भी रास्ते पे जाऊं तो या तो सही रास्ता निकलेगा जिसका बहुत कम चांस है, और अगर वो नहीं भी निकला तो अब अगले इंसान के लिए 98 ही ऑप्शंस हैं. हाँ, एक उसके लिए ऑप्शंस कम थोड़ा कर. होगा, वो एग्जैक्टली उसके लिए थोड़ा सा चांस ज्यादा होगा. एग्जैक्टली. अब जो भी वो फ्यूचर में हो, जो भी हो. दैट्स वेरी स्वीट एक्चुअली, लो की. Exactly. Like it is extremely great of you that you can see it, because mostly when I tell people that I'm working in such a field that is not even a field yet, तो लोग यही सोचते हैं कि तब तुम जिंदगी में बात कर रहे हो अपना. Very hard. I know कि I am selfish. I would not be able to come to terms with the fact like that. मैं कोई और फील्ड चुन लेता फिर. It's very hard to think वैसे. And to be honest, it is not very hard for me to choose any other field, because obviously I have the knowledge. If It's I like want, raising a child and then letting it go. it go. Exactly. Like these are the things that I even think and I even write, like अगर लोग कुत्ता पाल लेते हैं 6 साल तक, उसके बाद कुत्ता नहीं छोड़ पाते हैं. emotionally attached. I know. I guess This is to work. the thing that helped me with all this is because of my spirituality and stuff that I did in class 9th only. वो सब काफी काम So किया. are you religious? No, When you no, say no, no, no. spirituality, No, it is very weird what I did in class 9th only. I had this question in mind: who am I? The like initial point of everything, and then I started digging deep into this question. And by 12th, I got to some realizations and what to say revelations of who am I.
And then when I talked about it to some people, they told me what you are doing is called philosophy and spirituality and हाँ मैं enlightenment. यही बोलने वाला था कि फिलोसफिकल स्पिरिचुअल मैंने फ बोला लो हाँ आई डिड नॉट इवन न्यू कि इन सब चीज़ को फिलोसफी बोलते हैं. हम बस कर रहे थे, हमको बस एक क्वेश्चन था, उसका आंसर जानना था, बस लाइक दैट्स ऑल. लाइक एट दिस मोमेंट ऑल्सो आई वांट टू मेक एसी, आई विल मेक एसी, दैट्स ऑल. और कुछ नहीं जानना हमको. सो एट नहीं दैट दैट्स पॉइंट, that point it was like I have a question, who am I don't know who am I want to get the answer, that's all. So after 12th, when I got to, when I talked to some people, they told me it is called philosophy and spirituality and all. And then I read about it, and it turned out I was enlightened in class 12th only. I was at some god level shit I did not even knew. And yeah, so while I was trying to answer who am I like negated everything that I could be. Like, I'm not this body, I'm not this humanistic form, I'm not the name that I am, I'm not. that is a very smart thing to do. That's a very smart way to go about things. Like instead of finding the correct answer and then struggling, Exactly. find all the wrong Wrong answers answers. so that like the correct things can be left out. Yeah, You can that is follow exactly what happened to me in class 9th, 10th only, like at that age of you teenage and narrow it all. down. They cut all the wrong options Hmm. first. So when I cut out all the wrong options, like I'm not this humanistic form, so I don't have anything attachment or enchantments towards anything like that human generally have, and that's why I guess I can choose and do such things in this specific field. That's a very important role, I guess, and there is no one Like, else researching in hard this to field. research something जिसके ऊपर पहले से कोई मटेरियल ही नहीं है क्योंकि जब कुछ नया जान रहे होते हैं ना तो वेज ऑफ नोइंग होती है नॉलेज पाने के कई सारी वेज ऑफ नोइंग होती है सेंस परसेप्शन होता है कि जैसे छू के पता कर सकते हैं ठंडा है गर्म है क्या है हाँ बिल्कुल. फिर होता है लैंग्वेज मैथ्स की लैंग्वेज इंग्लिश की लैंग्वेज साइंस की लैंग्वेज फिर होता है सबसे बड़ा और सबसे काम लायक रीजनिंग रीजनिंग एक वे ऑफ नोइंग ऑब्वियसली वे ऑफ नोइंग से पता चला कुछ तो उसमें बायस और हम लोग का पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस भी होके वो कुछ और बन कंडीशनिंग जाता जैसी हम लोग की है, उसके हिसाब से अलग अलग है वैल्यू वो आते कुछ और हैं. बन जाते हैं लेकिन रीजनिंग में क्या एक चीज बहुत की है लॉजिक्स हमेशा लॉजिक. रीजनिंग में पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जैसे अगर मुझे पता है कि मैं एक ब्लू बॉल ढूंढ रहा हूँ तो मुझे पता है जो ऑब्जेक्ट मैं ढूंढ रहा हूँ वो ब्लू है और गोल है अब मैं बॉल इसीलिए ढूंढ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि ब्लू क्या है और बॉल कैसी दिखती है नहीं तो मैं नहीं ढूंढ. अब बात है कि रीजनिंग करना मुश्किल रिसर्च करना मुश्किल इसलिए क्योंकि उस पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है तो ढूंढना बहुत मुश्किल है इसलिए कम लोग ट्राई कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और काफ़ी वो भी है ना, मतलब रिवॉर्डिंग फील्ड नहीं उतना रिसर्च बाकी जैसे जो फील्ड है, क्योंकि जैसा ह्यूमनिस्टिक फॉर्म डिज़ाइन है ये हमेशा प्रोजेक्ट की तरफ भागता है. लोग ट्राई करते रहते हैं और प्रोग्रेस नहीं होती है. कितनी बार यूनिवर्सिटीज फंड करना बंद कर देते हैं रिसर्च. बिल्कुल, तो फिर अलग से देखना पड़ता है कुछ. क्योंकि द होल पॉइंट ऑफ यूनिवर्सिटीज फंडिंग रिसर्च इज बिकॉज कुछ फ्रूटफुल मिल जाए तो उससे प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट हो थोड़ा और बड़ी फ्री प्रमोशन होती है प्रेस के थ्रू. एग्जैक्टली. उनका मोटिवेशन वही है. अब वो देखेंगे कि अगर कोई रिसर्च हो रही है 20 साल से 15 साल से कुछ निकल ही नहीं रहा उसमें वो फंडिंग हटाने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें वो ये नहीं सोचते हैं ना कि ह्यूमन काइंड के लिए कितनी बड़ी चीज है, लॉन्ग टर्म गोल है. वो ये सोचते हैं कि अपना पब्लिसिटी नहीं हो रहा है, नहीं फंडिंग कम करो. बिल्कुल बिल्कुल. वही अरे बहुत प्रॉब्लम है रिसर्च में, बहुत काफ़ी प्रॉब्लम्स है. लेकिन अगर ये फील्ड नहीं होगी तो बाकी कोई फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, सब इसके ऊपर बनी हुई है. तो ये भी बात है. कोई को तो करना ही पड़ेगा ना, रिस्क लेना ही पड़ेगा. अब हम क्लास 9th 10th में इतना डिटैच हो गए थे ह्यूमनिस्टिक फॉर्म से, शायद से मेरे लिए करना बना है सब. बहुत लोग इसी में अटके रहते हैं, बहुत लोग प्लेजर के पीछे ही भागते रहते हैं, प्लेजर के लिए 10 काम करते हैं. So they go to and do engineering kind of stuff, makes money, and then get into the loop of making money, making money and enjoying, not even thinking for big future. Validation के चक्कर में basically. Affirmations and all, basic stuff. Exactly. I guess that intellectual हो आप. मेरे को लगा नहीं था कि मतलब मेरे को ऐसे भी इंसान मिलेंगे. Actually, I was feeling a bit homesick. That's why I thought to talk to some Indian people and get to know some Indians. अकेले रहते? हाँ फिलहाल तो अकेले ही हैं, अभी नए अभी लाइक इट्स बीन 20 days कमिंग हियर. कुछ कोई बात नहीं, गिव अप मत करना भाई. ऑब्वियसली ट्राइंग माय बेस्ट टू कीप थिंग्स अप. लेट्स सी हाउ. आई अंडरस्टैंड, नया एनवायरनमेंट है, नए लोग हैं, प्रोबेबली सारे लोग अच्छे भी नहीं होंगे. हाँ ऑब्वियसली नॉट.